Hello everyone. So in this video we will see the responsibility of ministers. So what does the meaning of the responsibility? Responsibility का मतलब क्या होता है? Responsibility अगर आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी है तो उसका मतलब क्या है? It means you are answerable for that. It means you are answerable or accountable for that thing. For example, जैसे कि मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, सो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स यू कि ये जो है फैक्ट्स फैक्चुअली करेक्ट होने चाहिए. So I am responsible towards you. It means I am answerable to you. I am completely accountable to you. Okay. So it is the meaning of the responsibility of the ministers. So now we will see the responsibilities and what are the meaning of these responsibilities. So collective responsibility. What does collective towards whom the ministers are collectively responsible? Under Article 75. The Council of Ministers are collectively responsible to Lok Sabha. They are collectively responsible to the Lok Sabha and not to the Parliament or Rajya Sabha. Collective responsibility. So a minister जो है these Council of Ministers under Article 75 are collectively responsible to the Lok Sabha, not to the Parliament, not to the Rajya Sabha. अगर हम कहते हैं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे हम सोर्स एज अ सोर्स कॉन्स्टिट्यूशन को कोट कर रहे हैं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, टू ओनली लोकसभा, नॉट पार्लियामेंट, नॉट राज्यसभा. ओके. सो जैसे कि आपने एम पी एम एल ए उसको आप चूज़ करके भेजते हो पार्लियामेंट में, लेजिस्लेटिव असेंबली में, सो यू कैन सीक आंसर फ्रॉम देम. अगर आपको कुछ इशू है यू कैन सीक आंसर फ्रॉम देम, बट दे आर नॉट आंसरेबल टू यू or you cannot hold them accountable. Okay. The government is answerable and accountable. Okay. लेकिन जब हम जब भी हम एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन बात करेंगे या कॉन्स्टिट्यूशन को कोट करेंगे, वहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा एंड नॉट टू द पार्लियामेंट एंड नॉट टू द राज्यसभा. ओके. लेकिन जब हम जनरली बात करते हैं, दैट इज़ आमतौर पर विदाउट कोटिंग कॉन्स्टिट्यूशन और विदाउट यूजिंग द सोर्स, then executive are responsible to legislature or executive or government is responsible to the parliament. So अगर मैं ये कहूँ as per the constitution council of ministers are responsible to the parliament, this statement is completely wrong. Okay. But in general terms, if we talk generally, the executives or the government is responsible to the parliament, then this is right. But constitution doesn't say that. Constitution says under Article 75 that Council of Ministers are collectively responsible to the Lok Sabha. Okay. And what is the meaning of this term collective responsibility? This means that Council of Ministers represent one unit. They represent one unit or a team It means they are collectively responsible. यू कैन नॉट हेल्ड वन सिंगल मिनिस्टर. जैसे कि कोई जैसे फार्म लॉज आए, उस वक्त जो है एग्रीकल्चर मिनिस्टर को आप आंसरेबल या अकाउंटेबल होल्ड नहीं कर सकते हो. यू हेल्ड द एंटायर गवर्नमेंट, एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल. सो दे हैव द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ वन यूनिट. जैसे अगर कोई भी मिनिस्टर जो है अब एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए ईजिली वी हैव अपॉइंटेड मिनिस्टर्स जो है साइन करते हैं एंड देन दे लॉज एंड पॉलिसीज़ की फॉर्मेशन करते हैं. बट अगर जैसे हेल्थ मिनिस्टर कोई पॉलिसी लेकर आए एंड वो लॉफुली गलत हो गई, सो यू कांट हेल्ड दैट ओनली द हेल्थ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल फॉर दैट पर्टिकुलर मिस्टेक. द एंटायर गवर्नमेंट इज completely responsible for that thing. So this means that what is the meaning of collective responsibility? This means that Council of Ministers represent as one unit or a team. That is, there is a very popular statement in the parliamentary form of government that Council of Ministers swims and sings together. अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाऊँ, जैसे क्लास में कुछ लड़के ग्रुप बना लेते हैं, जैसे 5 लड़कों का ग्रुप बन गया, तो वो साथ में रहेंगे, साथ में खाएंगे, साथ में उठेंगे, साथ में बैठेंगे, साथ में क्लासेस लेंगे. लेकिन अगर उनमें से किसी एक की भी गलती होती है, दे विल नॉट पॉइंट आउट दैट पर्सन, वो गलती मानेंगे ही नहीं. ठीक.
तो मतलब वो एक साथ डिफेंड करते हैं, अगर गलती से एक से हुई है तो दे विल डिफेंड फॉर दैट पर्सन, सब मिलकर डिफेंड करेंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक्ट्स एज वन यूनिट और अ टीम। तो अगर कोई गलती होती भी है देन फॉर दैट एक्शन द कंप्लीट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी और दे विल बी आंसरेबल फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। ओके, सो लेकिन इफ अ मिनिस्टर डिसएग्री with council of minister then he has to resign. If a minister disagree with the council of ministers then he has to resign. वही जो मैं आपको एग्जांपल दिया। लेकिन अगर जो 5 लड़कों का ग्रुप है उनमें से कोई मतलब एग्री नहीं करता है ग्रुप के ओपिनियन के साथ एंड ही पॉइंट्स आउट एट द मिस्टेक ऑफ द ग्रुप मेंबर, उसमें उस वक्त क्या होगा, उसको ग्रुप छोड़ना होगा, देन ही हैज़ टू रिजाइन फ्रॉम द ग्रुप। Same goes with this council of ministers. If a minister disagree with the council of ministers, then he has to resign. Okay, so they are collectively responsible. They are collectively answerable. So the government is answerable. You cannot hold a minister. आप उनको जाके नहीं पढ़ सकते हो कि आप एग्रीकल्चर मिनिस्टर से जाके पूछोगे कि भाई ये आपने क्यों किया, ये कैसे किया। द एंटायर गवर्नमेंट इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। अगर पार्लियामेंट में जब बहस भी होती है सो क्वेश्चन उठाए जाते हैं गवर्नमेंट के ऊपर, सरकार के ऊपर क्वेश्चन उठाती है अपोजिशन, दे विल नॉट हेल्ड रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल ओनली अ सिंगल पर्सन। सो दिस इज अ वेरी पॉपुलर स्टेटमेंट इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स स्विम्स एंड सिंक्स टुगेदर। ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि वो सब इकट्ठे रिस्पॉन्सिबल है अपने एक्शंस के लिए। आप किसी एक को जिम्मेदार या आंसरेबल नहीं ठहरा सकते। द एंटायर गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू द पीपल और टू द पार्लियामेंट। ओके, moving ahead with the individual responsibility. So to whom they are individually responsible? A minister is individually responsible to whom? A minister is individually responsible to the president. A minister is individually responsible to the president. What does it means? That is, he can be removed by the president. He can be removed. A minister can be removed by the president. However, such removal can be exercised only on the advice of prime minister. ठीक है, हमने इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ा। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्ट्री किसके प्रति होगी? ही विल बी इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, सो ही कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट, हाउएवर सच रिमूवल कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज प्रेसिडेंट वर्क्स ऑन द एट एंड एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो अगर किसी मिनिस्टर को हटाना है तो पीएम कैन एडवाइज टू द प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट विल रिमूव दैट पर्टिकुलर मिनिस्टर। लेकिन दिस इज रियरली ओकर्स, क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर को किसी क्योंकि प्राइम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करने वाले होते हैं प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट, बट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ओनली। सो जिस टीम का गठन ही प्राइम मिनिस्टर ने किया है, अगर किसी को मिनिस्टर बनाया, वो अपॉर्चुनिटी दी है किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिनिस्टर बनने की, तो वो प्राइम मिनिस्टर द्वारा दी गई है। ठीक है, सो जब भी अगर किसी से नाखुश है प्राइम मिनिस्टर, देन ही कैन गो फॉर द रिशफल ऑफ द कैबिनेट, वो रिशफलिंग कर सकते हैं कैबिनेट की। लेकिन अगर उस वक्त क्या होगा ना, सभी एवरीवन विल गिव द रेजिग्नेशन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द मिनिस्टर। सो अगर उस वक्त कोई विलिंगफुली मतलब जो है रेजिग्नेशन ना दे, रेजिग्नेशन देने से ही मना कर दे, तो उस वक्त दिस पावर कैन बी एक्सरसाइज कि प्राइम मिनिस्टर कैन एडवाइज द प्रेसिडेंट टू रिमूव दैट मिनिस्टर। So in that case this individual responsibility we can see the execution of this responsibility. So a minister is individually responsible to the president, therefore he can be removed by the president. However, such removal can be exercised only on the advice of the prime minister, because it rarely occurs in reality, as the prime minister, if not satisfied with his minister, he can call for the reshuffle in the cabinet, in which new ministers are appointed after the willingly resignation by the previous ones. But if they refuse, in that case this can be exercised, that is PM can advise to the president that he should remove that particular minister. Okay, now moving ahead with legal responsibility. So is it applicable in India? No, it is not applicable in India at all. There is no concept of legal responsibility in India. It is not applicable in Indian constitution, but it is applicable in UK. Okay, what does legal responsibility means?
legal responsibility in UK, the king or the queen cannot do any public act without the counter signature of the respective minister. काउंटर सिग्नेचर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे ये मतलब वहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, तो वहाँ पे मोनार्की कुछ गलत कर ही नहीं सकती. विलिंगफुली दे ऑल्सो दे कैन नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग, बिकॉज any public act which will be undertaken by the king or the queen will be countersigned by the respective minister. Respective minister will first sign it, and he will be legally responsible for the act. This minister will be legally responsible for the act. Okay, so अगर कोई भी मतलब कोई भी सिटीजन जो है कैन हेल्ड द मिनिस्टर लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट. अगर कोई भी लॉ ब्रेक होता है उस एक्ट की वजह से, तो जो है सिटीजन कैन हेल्ड द रेस्पेक्टिव मिनिस्टर legally responsible for that particular act, but they cannot hold queen or king legally responsible for the act, because the act is any public act which is undertaken is countersigned by the respective minister. So you can, in UK, a minister can be held legally responsible for the act. Therefore, if the act violates the law, the minister is responsible in the court of law. He has to be answerable in the court of law. And what is the case in India? In India, an order of president need not be countersigned by the minister. इंडिया में क्या होता है, प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और एनी मिनिस्टर विल नॉट साइन. It is left to the president to make rules. President will make rules under Article 77, and how the orders are to be authenticated, ये भी president ही देखेंगे. Further, under Article 74, courts are barred from inquiring into the advice of Council of Ministers. So, Constitution does not allow the courts to inquire into the advice of the Council of Ministers. तो president हमको पता है Article 74 के अंदर he works on the advice of Prime Minister plus Council of Ministers. So ये जो एडवाइस है, जो एडवाइस प्रेसिडेंट को देते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दिस एडवाइस कैन नॉट बी इंक्वायर्ड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ इन इंडिया. ओके, सो देन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? कोई एक्ट हुआ ना तो मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है, ना प्रेसिडेंट को हम हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा कि उनके पास बहुत सारी प्रिविलेजेस हैं एंड इम्यूनिटीज़ हैं, सो ही कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल. देन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल. There is the concept of collective responsibility, but no any legal action cannot be taken against the government as well. So इंडिया में आप अगर कोई भी ऐसा एक्ट होता है तो गवर्नमेंट इज ऑल्सो नॉट लीगली रिस्पॉन्सिबल. So there is no concept of legal responsibility in India. So this is everything about the responsibilities of the ministers. Now write some points about the Article 75, as we have already opened up on Article 75, but write some points. Council of Ministers are appointed by President on the advice of Prime Minister. Point number 2, they hold the office for the pleasure of President. Therefore can be removed by the President on the advice of Prime Minister, and collectively when they lose the confidence in Lok Sabha. So I repeat, they hold the office for the pleasure of the President, therefore can be removed by President. Individually on the advice of the Prime Minister, and collectively when they lose the confidence in Lok Sabha. Okay, so President can individually remove a minister on whose advice? On the advice of the Prime Minister, and collectively when they lose the confidence in the Lok Sabha. Okay, point number 3, President administers the oath of office and secrecy. Oath of office and oath of secrecy. Point number 4, Parliament shall determine the salary. Parliament shall determine the salary by passing a law. So Parliament has enacted
salaries and allowance of ministers Act 1952. Okay, so as per which they get the salaries as MPs. So they get the salaries as MPs. I repeat, Parliament shall determine the salary by passing a law. So what is that law? The Parliament has enacted Salaries and Allowances of Ministers Act 1952, as per which they get the salaries as Member of Parliament. So that's all. Thank you so much.